Hawk. I thought you were gonna see madness. I was thinking already of the hot drop that's gonna be happening Erangel. on Sandhawk as well. But in regards to Erangel, I mean, I kind of have to go back to what I was saying with Navi and Alpha 7. It's going to be very interesting to see how those teams are going to be playing as well. Now, on the top, Thor Severny, they're going to have to worry about Team Secret if Team Secret does decide to drop there. Yeah. Something that happened a lot to Alpha 7, especially during the West Finals, was that Alpha 7 kept getting caught off guard. They weren't really expecting for a team to still be there. Alpha 7 has been rotating very late as well. So it's going to be interesting to see how they're going to be able to adjust to that. And then we have consistency in those maps, and if so, we could see the Arabic region with Enigma Galaxy step up big time here. Yeah, and speaking of big-time wins, big-time plays, big shout-out to OnePlus, our sponsor here at PMGC. With the OnePlus 9 Pro, you get 90 FPS Ultra smooth gaming. And when you use a OnePlus, you never have to settle. So keep that in mind, as well as a big shout out to Fairmont Singapore for catering PMGC for the highest degree of pampering and 5-star award-winning hotel service. I wish we were there because that would be great. I know Seven, myself, Max, we'd be sitting there in a chair getting our nails did. Pamper us. Getting what, a pedicure it's called. I've never had one of those. I get a tan most likely as well when it's snowing here in Berlin, which is where we're currently doing the show from. But guys, I mean, we're almost actually about to kick off our first match here, and I'm getting really excited, really pumped up for a couple of teams in particular, and I want to start to focus a little bit more on them. I want to start things off talking about Godlike. Yeah. Team from India coming in from BGIS. They have not played in an international competitive event like this since 2019, if I'm not mistaken. Like, that's how long it's been. The drought has been a very long time for teams from this region. They have so much pressure on their shoulders, but the upside for them is in 2019, they played in the PMCO global finals for the fall split. Yep. They're used to this kind of pressure. They're used to playing at this kind of caliber. They have 3 players returning from that, with Clutch God coming in from Team Seoul, who did play as well in there. This team has the weight of an entire country on their shoulders, and we know how passionate the Indian fans are. We know how strong India is in general when it comes to PUBG Mobile as a region. But the problem is they haven't had a lot of time to prepare for this event. Yeah, that's the thing. Odds are stacking somewhat against them because they didn't have time to prepare that much. They also had to travel the last time. It got a little bit complicated on their side, and of course the drought you just mentioned there, Jason, that makes it a little bit hard for them to try and potentially get that experience. But they did in the past. Back in 2019, they had some really good results. They're coming back in the scene. I said it, a top 5, if they make it a top 5 here, I would be genuinely impressed because this is going to be a really rough tournament for them. So we'll see if they can make it. I'm not even going to be impressed if they get top 5. So I'd be like, yeah, just another day at the job for them. And speaking of Godlike, go ahead, Sam. With Godlike, I was actually going to mention Clutch God. You mentioned him. He used to play with Team Seoul. That team didn't really do so well. We expected a big hype for Clutch God, and it just didn't happen. It seemed maybe the pressure of being on the big major event kind of crumbled him a little bit. Here, now he has a lot more experience. He's been able to play with this team for now more than 2 years. So it's going to be very interesting to see if finally, right, we had so much expectation out of Clutch God. If finally we're going to be able to see it. And then how is he going to be working together with Jonathan? Because we know Jonathan, at least for me, he's one of the best players out of India. So I'm going to be excited to see if they're going to be fragging out, how they're going to be able to work together as well as a duo. Yeah, well, that is why, for me, as we just talked about, why, in my particular opinion, Godlike is a team to watch here over the course of the event, especially in this first match. I want to see how they start things off, how they get things going. And on the note of Clutch God, I mean, he's in the same boat as Frozen from Next Korea. At least he was back then, right? There's so much hype around this player as an individual. Clutch God, unfortunately, didn't live up to the hype then. But speaking of hype, Max, which team are you looking out for to watch? I mean, I already talked about Star Wars. You know, this is a team that I think could be going for that first place, getting that 1.5 mil. They just have everything ironed out to perfection. So Star Wars is going to be the one that I'm going to be supporting until the very end, and hopefully they can make it go really far. I would like to see minimum a podium finish. Okay, so Godlike for me, Stalwart for you. Seven, who do you got?
do Brazil. Come on. Come on. You Look at know this I West guy. had to. I had to go with Alpha 7 for all the stuff that I've been mentioning in regards to Navi, how they're going to be adjusting. And this is a team that can definitely carry momentum. And if they can start hot, I would love to see how they're going to be able to carry that momentum. I mean, they dominated. I mean, I think dominated is an understatement when it came to PMPL Brazil, right? They were the most formidable force coming out of that region. And in particular, you have Seta Texa. You know, he actually played back in 2019. He's here yet again on the big stage. Carrillo's back from last year, who's looking to redeem himself and obviously help take Alpha 7 to the next level. If you guys watch Between the Battlegrounds, well, if you haven't, you need to go watch it. But you get to hear about Carrillo and talking about the problems they've had within the team and him trying to help step back up for themselves. And speaking of stepping up here, we're going to step up the hotness game on the show. We're going to bring our commentators in for the first time of the day for the first 3 matches. Necro, Mustache, Dave, take it away, boys. Hey, thank you, Jason, Maxman, and Seven. Beautiful work. What an amazing day here. We got 18 games, Necro. Are you pumped up? Oh, dude, it's not even a question. Definitely pumped up, man. I mean, the first game of the Grand Finals. Dave, we have been waiting for this moment for a long time, without a doubt. Ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, good evening. PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. We got the best teams and players in the world right now. Nova Esports Paraguay, Godlike Esports Jonathan, Alpha 7, Carrillo, Stalwart Esports Action. 9 teams from the East, 6 teams from the West, 1 team from India. Best of 18. It all starts now. Necro, let's get into the game. Oh man, it all definitely starts now, and playing Flat Path as well, starting all the way from down south. This is going to be an interesting one, Dave. I can already tell the hotness in the military base. I can already tell it, man. Stalwart Esports, we of course know they like to drop in Nova Reptoy. Now, if you talk about a lot of drop clashes coming inside the map of Erangel, I mean, the only drop clashes that I'm really going to be witnessing over here, it has to be like Navi and Alpha 7. Because they're playing Flat Path as well, I do want to see what kind of improvisations these teams are going to be showing. Oh, we are talking about it. Talking about the plane path, man, all the way down here towards the south. Yeah, I agree with you. It will kind of force these teams to some uncomfortable positions that they might not be used to with their tried and true drop spots. One in particular, you talked about Navi. Look at this, kind of spread out there on that west side. They are going to have to possibly get to an early engagement, but circle number 1. Yeah, circle number 1. It can't be any better, all things considered, with this plane path. Oh, dude, a complete sudden circle. That means teams like Stalwart Esports, they're going to be favored here big time, including Infinity and Navi as well. Now, if you talk about improvisations, Navi, I mean, if you've never seen them drop over there, Dave, like, what are your thoughts on that? I'm sure they got some practice. You know, they are a world-class team, right? And I do like this position that Navi are going to be holding down because of the zone. Now, if the zone would have shifted up there towards the north, where they would have to quickly loot and then rotate on out of that current spot on that west side of the military base island, I would be a little concerned. But now, I feel like they have quite the advantage because they can get that loot, and they could possibly, Necro, set up a beautiful bridge camp out there on that west bridge and possibly get some early game elim points here, which could, you know, do wonders for them. Oh, dude, that's definitely going to be doing a lot of wonders, especially trying to hold off a team like STG that's going to be trying to make it in on the left side of the bridge. That's going to be quite interesting. Now, if you talk about rocket starts, you know, if you talk about boosters on the overall rankings, you've only got 3 days to work with, 6 games each day. And now, if you talk about booster starts, HTG has to be one of those teams that are really good in those couple of initial days. But if you talk about some good things, some good shots kind of taken on himself and 4 rivals, not really looking that great for now. One man taken down quite low, and he's also getting pushed on by CC. Yeah, looks like we got a classic 2v1 here. 4 rivals about to lose one. Oh, make that a 3v1. Oh, iShot pulling up with that UMP. Looking to get, I believe this is the first elim of the tournament. So there we go. The match has officially started here, Necro. The first blood, man. The first blood. Not going to be happy after that one. 4 rivals. They're definitely going to be having a little bit of sad aura on their team, but it's fine. They still have 3 players to work with them. We've seen in the past as well. Sometimes the trio can make a lot of things happen, Dave. Yeah, and right there, the PMGC token, like Jason mentioned, we're going to hit 1 million viewers, and everybody going
going to be getting them nice, juicy rewards. Now, getting back to the game, we got Fenerbahce. At least one of my favorite players, the Duke Machine. We can see him out there in that buggy with that nice rotate. Action, though. Action. Going for some shots with the M4. Connecting. And keep in mind, connecting on a moving motorcycle. Action has to be one of my favorite players also from Stalwart. One of the strongest players, in my opinion. We saw them from their respected region, able to get a ton of elim points and put in a ton of damage. I really like Action and Top. That duo right there is definitely a duo to keep your eye on this tournament. But gotta say, Fenerbahce definitely got nerves of steel to pull off something like that. Just to sneak past through Stalwart Esports noses like that. Oh, that's a bold move, and that's going to be paying off quite well in the future as well. And now if you talk about Stalwart Esports, man, I've got a huge history behind this team. Coming inside, first time I saw them in the PMP Season 3, actually, no, scratch that. I saw them in the wild card, in the PMCO wild card playing. I was like, all right, this team has a lot of caliber. Then later on moved in the PMPO Season 3, they absolutely dominated that as well. And then even in the SA Championship, dominated that as well. And back in the day, they were known as like the Astra Academy, right? And then later on, coming inside in the future, they got signed by Stalwart Esports, and now we're here, Dave. Now they're here. They are, they're literally one of the best teams out there. The best lobby in the world, too, right now. The top of the competition. I love how you said it. Now they're here. They legit started from the beginning. And another kind of interesting kind of note about Stalwart in particular, just looking at the East League, they were, if not one of the most consistent teams when it comes to Erangel. Now, bringing that up because we only got 18 games. Okay, hear me out. We only got 18 games. Erangel makes up 50% of those games. What are your thoughts, man? Stalwart Esports, where do you see them performing here? With that in mind, with that knowledge that I just laid on you. Now, look. Not just Stalwart Esports, there are a couple of teams that are really good. I would say pretty consistent on each and every single map. So we cannot rule out Stalwart Esports just like that. Yeah, I do understand they have one of the most consistent rate, coming inside the grand finals as well. So I would say Stalwart Esports, they're definitely going to be one of those teams. At least we're seeing top 3, man, inside the Erangel, without a doubt. Without a doubt. I'm a true, I'm one of them dudes that I like to look at the numbers. I like to crunch them, and I like to base my opinions on these numbers. So that's why when I was looking at Erangel, and with that in mind of it being 50% of the map pool, I also had to kind of turn my eyes to the West League to look who's the most consistent over there. And there was one team that popped up as far as consistency on every single map. Erangel, Miramar, and Sanhok. Guess who that team is? From the West League. Do you have a guess? Alpha 7? Alpha 7, yes. Alpha 7 were, if not the most consistent team from the West League here. And I gotta say, 7 from the desk picked them not only because they have a 7 in their name, but 7 knows for a fact that this team is definitely going to be giving it their all here in this lobby, along with all the other squads, of course. But if I had to pick, this is where I was going with this. If I had to pick a team as well, it's going to be up there at the top. The Mustache Dave pick has to be Alpha 7. And hey, we also got to talk about the team from India, man. Godlike. Now, let's session loud on this. I'm pretty sure the analyst desk did a really good job on pretty much, just taking out the history for how long it has been. They haven't really been in this kind of a competition. So, I mean, I do understand it's going to be a huge change in the pace as well for Godlike. So what do you think so, man? Is the adaptive nature going to kick in right now? Or is it going to be maybe tomorrow? So, Godlike might not have a lot of time to really hone down, practice, get comfortable. So, I think it's not going to hurt them too much because I feel like a lot of teams have the same nerves, right, coming into the day. And we can kind of see it. They're playing a little slower. They're not all just rushing to a spot, somewhat center, especially the teams up north. They're taking their time to rotate. They're just waiting to see where this next zone goes. So I think Godlike can kind of play that into their advantage, right? They know for a fact other teams are going to be playing slow, trying to get a little loose, a little comfortable. And I think day one, if I'm Godlike, I'm just looking for consistency. And what I mean by that is, constant placement points every single game with a couple elim points, right? Just get a good foothold on the overall leaderboard so that day 2 and 3, you can really run with it.
Yeah, but from what I saw in the BGIS, Dave, is that Godlike is one of those teams that is really kill hungry, right? They go for those kills. They're kind of like an aggressive team, which is understandable. But yeah, as you mentioned over here, consistency is what really matters, and you need to go for those placement points as well. Just kills points isn't going to seal it. You need those placement points as well to try and make your mark on top of the leaderboard. But yeah, we also do have the next circle shifting in, and I do really like Fenerbahce's position. Fenerbahce. Straight chilling out there. We also got Furious Gaming making the swim. S2G are going to be braving it to send it across this bridge. Nice strat. Remember earlier on, I was kind of calling for Na'Vi to possibly be able to gatekeep this bridge, but instead of gatekeeping this bridge, it looks as if Na'Vi kind of sent it down to the south of the island. So they're going to be playing this one a lot safer, trying to avoid those early skirmishes. Very interesting play, but we might have a potential fight over here on this bridge after all, because now Nova are going to be trying to drive on through here. Oh man, they're going to be having a clear pathway for sure, because H2G as well is trying to play for their survival. We do see Solespew kind of closing his distance, but again, shouldn't really be that big of a threat for Nova. So for now, things are going to be looking quite calm. But as I mentioned, Fenerbahce's position definitely Dead center. kind of in the, yeah, they're like right in the center of the zone as well. And Godlike now going for that late rotation in southern circles. Now, if you talk about West Side, Dave, we do know Na'Vi is one of those teams that do like to go for those late rotation in these military-based circles, and it never pans out for them. No, so we'll definitely keep tabs on them here in game number one. I'm looking at Godlike too. I mean, we caught a glimpse of Godlike. It looks like they were trying to be a little aggressive, but that was up against A7, so we'll have to get back to that one. Looks as if both teams kind of backed off from each other for the time being. And that's kind of the story that we are seeing for a lot of these teams here early game, is that they would see each other and then try to back off. They don't want that smoke. But talking about wanting that smoke, the boat taint, yeah, the failed boat taint out there on that west side of the coast. So Na'Vi, they didn't bridge camp, but they are doing a good job at trying to pick up whatever type of elim points they can out there on that coastline. Oh, dude, Na'Vi definitely just beaming him out the water, man. Unfortunate, the boat just blew up, and 6-8. Not going to be happy after that. Losing 2 players already inside the game. Definitely going to be having those sad faces. But yeah, Na'Vi, I do like the huge improvement that Na'Vi has shown. They're already on the military island. They're kind of looking good. Tixie all the way on the south side. A huge separation, but still, they have a lot of time to work it out. But DXavier making bold rotation out in the open, taking little shots from Nova. Nova as well, making sure that DXavier not going to be stopping by anywhere near. Looks like Nova Esports is going to be picking up a nice little compound here. 3-1 split. They got 3 squad mates out there on that west side, and then Border still kind of straggling in the back line over there. They were taking some shots at DXavier as they did casually pass by on that high ground. For the time being, though, it's all about getting these early game positions, especially with this military-based zone. And you were looking at Fenerbahce. They were somewhat dead center. Next circle is going to shift here very shortly. Let's see, will it play into their favor? Stalwart Esports, too. I like that spot all the way up there at that radio tower, the highest vantage point here. Will it pay off? We'll find out right now. Oh, it does. It does. S2G and Fenerbahce right in the center of the zone. Fenerbahce having the majority of the center, but again, the split is good, but if even one of the players gets bought out, and even if he gets taken out, that's going to be quite a huge task for Fenerbahce to go back to that player and get the rest back up. So I feel like at this point in time, they should be a little gathered up. Maybe a 2-2 split can work out pretty well. Damwon out here trying to defend here on the cliff lines. Team Secret looking like they're going to pull up. So far, it's a 2-2 split, but the other 2 squad mates in the back lines trying to group up. Buy shots, though. Mini in hand, applying that pressure. Here we go. First fight, first 4v4 of the game. Oh, here we go. A kill already found. Jumper being taken out. Instantly gets confirmed as well. Fredo has a little bit of disadvantage with that low crowning. He gets taken out as well. And now shots. Oh, he's taking some shots from the left side. He needs to watch out because Junie has a huge advantage. Also with that high crowning. Shots doesn't really have a good positioning. Just has that wiggle to work with and gets blown to smithereens. Just like that now. He's been taken out of the game. And that's going to be it for Team Secret. Wow. Eliminated, Dave. The first team to get eliminated in the first game. Wow. Yep. My Damwon, too.
One of the teams definitely showing up here from their region, cashing out, looking to continue trucking along with that momentum. And we were looking at Godlike a couple moments ago as they were crashing out there in the distance. Looks like Alpha 7 might have caught a whiff of a squad back here. They're going to be setting their flag right now on the beaches, in the terrain. They are looking to just stay back here and get these elim points. Looks like they'll be camping this one out. Oh, they have to. Because, I mean, A7 clearly knows that they have the prime positioning inside this fight. They can just try and hold up Godlike. But that's a beautiful knockout found in the A7 involved. 4 rivals just making that rotation. They were like, all right, this is our right moment to go in. And they just sneak past through Alpha 7. Alpha 7 with that knock being found, kind of bought enough time for Godlike to make that push happen. And here we do have Clutch God as well falling down in that push. Wow, Carrillo, what a great anchor position. They were in the back lines, pretty much playing oversight of their 3 squad mates that were pushed ahead. And it looks like it paid off. But let's see, though. Jonathan went for that wide rotate. Now he's going to be inside the smokes, looking to toss this grenade, looking to get a couple confirmed. Kaboom goes Jonathan right there with the double. Oh, that's filthy. That's disgusting. Both the teams have 3 players knocked out, but unfortunately, Godlike, they're only left with 1 man standing. Same thing goes with Alpha 7. But now Jonathan gets Neo back up on his feet. That's going to be sigh of relief for him. Godlike now. Jonathan especially looking to confirm the kill and trying to take out the final man as well. That's going to be his main goal. But guess what? The reply comes in through from the side of Carrillo. Carrillo as well is one of those players. He's one of the best out there. You can't just challenge him like that. Yeah, Carrillo is in the back line, though. So best case scenario for Carrillo, try to avoid the sight lines and just survive at this point. They do not want to get taken out right here, right now, because a 14th position in Game 1 would net them 0 points. And that is not how Alpha 7 want to start this. But huge props to Jonathan right there. That double grenade definitely turned the tides for Godlike. Oh, that did. That was a disgusting night, without a doubt. H2G. 7 just kind of driving off the compound, didn't realize it's already being occupied by Fenerbahce. So not interested in taking it. Fenerbahce doing a good job. Rebellion as well, trying to secure the vehicle, just making sure the tires aren't being popped off, but gets shot from the back. And here comes the push from Nextria. There's a huge charge in, and Fenerbahce seems like they're crumbling down slowly and steadily. 2 players already being knocked out. Nextria have 2 players knocked out as well on their side. You want to see how this fight's going to be panning out, and now it's all down to Duke and Machine. It's up to the Duke and Machine, the Duke and Master with the grenade, trying to get that to that little window. Overshot it just a little bit. Does look like their teammate was able to pop into their compound, looking to get that revive. And here comes Noxbomb with the support here. Looks like the revives were successful on the next Rhea. Let's see, though. Noxbomb has a lot on their plate. They need to clutch this one out. Oh, they do need to clutch this one out, but third party from Stalwart Esports. It's Pika who takes out Noxbomb. Duke and Machine again. Rebellion. These 2 players are alive. Duke and Machine, we do know what this man is capable of. He can pull off some insane clutches, but again, he's kind of like that man who likes to stay as squad as possible, but that beautiful nade is going to be taken out. Rebellion is also getting burnt down with that Molotov. That's not a good sign for Fenerbahce. Things are slipping out of their hands. Yeah, next Rio, they were able to get the full reset over here. 4 squad mates up, pretty solid compound. This building, this area, dead center. Let's see, Duke and Machine back against the wall, getting collapsed in on right now. UMP in hand, no chance. That drop shot. No chance right there. Next Rio, taking that compound from Fenerbahce. Uzi is just too good in those close range. Just an absolute shredder. That drop shot as well, just in the mix. Oh, it's just kind of like a sprinkle of salt on top of it. But yeah, now we have Nigma Galaxy, another one of those teams that I have definitely eyeing out for. Nova as well, having pretty decent positioning inside here. Hamoudi in the front lines of Nova. King and Powerboy just trying to hold him off of Bay. Really do enjoy what Nova Esports have been doing this whole game with these splits here. So now they're going to be separated for the time being. But Don One still out here just destroying the edge right now of the play zone, hugging it. 5 elim points so far this game here. Necro, talk about starting strong. That's exactly what they are doing. And if I'm not mistaken, that's pretty
much the same story that they did during the East Final Championships. They started early with a chicken dinner and 19 elim points over there in those finals, and from there they just maintained it. So if they can get that same start here, not one, we might be looking at a possible championship top 5 team. Oh man, the next circle shift is going to be just such a huge thing, right? It's going to be moving out in the open. Trust me, it is, and yes, it does. And now the only teams are in. They have a couple of components on their name, but they're only going to be the lucky ones. Dawn Gaming, it seems like they're just getting absolutely demolished by Na'Vi, because Na'Vi has huge high ground. With the high ground, they have also gotten a huge advantage over Dawn Gaming. So Dawn Gaming, they will need to try and take care of Na'Vi if they want to make it out of this tricky situation. And for that, they will need to find another knockout. That will buy them enough time, but the nade from Tixi will keep Sung down. Ooh. They need to clean this one up quick, too, if you are Don Juan, because you are about to be pinched from Nova Esports from behind. So hopefully they have their head on a swivel and they don't just get sandwiched here. Oh, man, Tixi is still just looking to inflict pain. And I do also see Nova kind of closing their distance onto them. And yes, Nova is looking to third party this entire situation. Paraboy in the front has a nade cooked up. And this nade might just be $1 million nade, but no, instead it was a little underhand. Just kind of understandable. Did not really make it up to the mark. 4 is still knocked down for Dawn Gaming, including Junie. Fabian, I can just imagine this man's nerves right now. They're probably rattling. And just like that, Dawn Gaming as well get eliminated. Done. And Na'Vi, they do have the high ground, but they also have that little dip in the terrain up there that's really helping them keep their sight lines low from Stalwart in the back line. But after that one push, they were able to get a couple elim points, and they started to pull back because they recognize that there is another threat downhill. And that little dip that I was just talking about, it might be their demise, actually, because Stalwart, they reposition, and now they have sight lines on that dip. So Na'Vi, nowhere to go. Oh, Na'Vi, definitely nowhere to go. They did get themselves a decent amount of elim points, if I'm not wrong, from that previous fight, but still. Now, because the circle moves out in the open, they will have to move from cover to cover. And just like that, not enough cover, indeed. And Nova going to be catching a little glimpse of Na'Vi. Xavier as well, if I'm not wrong, it's just going to be it. He's trying to just survive for as long as possible with those meds, but not going to be able to make it for that long. Mela gets his game spot from the back, and it's going to be Xavier who does that. See ya. 7 teams to go. Nova Esports, we can see right there, 7 elim points. Stalwart Esports, 6 elim points. So Nova, they've been playing that west side. Stalwart Esports have been playing that east side of these zones. They're about to meet here very shortly. I do see Top, I do see King kind of up close and personal with each other, but right now the main focus has to be this next circle. Where will it go? Who will be favored? I'm looking at next Rio. They got a compound. Will it be favored? If so, they're going to have a huge advantage. Oh man, but still the circle out in the open like that, and now favoring next Rio as well. Kind of favoring, not really. They're kind of like on the edge of the zone, but still they have the only compound inside the zone as well. So next Rio, they are going to be having huge side relief after that zone shift. But Noah, do you realize there's a team in the front? Need to watch out because it's Stalwart Esports as well. It's not just any other team. One of the best teams out there. Noah as well. We can't really underestimate them for sure. So this is going to be definitely a clash of titans. Chilling. Down there in the bottom right-hand corner. Chilling. Talk about snaking it to make it. Talk about looking for them placement points here. Oh, I hope this pays off for him. But one of the main just fights... taking a nap. Just taking a nap. Yeah, dude. One of the main fights. We got 2 main fights, actually. You got Nova Esports, Stalwart up there towards the north. And now S2G crashing next Ria's compound. Oh, dude. They do realize the prime compound. And S2G is one of those teams that will not back out without a fight. Oh, I thought this nade might just do it. Yes, it does. Confirms the elim. That's going to be a huge thing for them next Ria. Still having the prime positioning inside this fight, and S2G having all the disadvantage in the world. This nade might be good. Oh, did not really make it to the mark. What a call, though, from next Ria to be able to decide to take this compound towards that mid-game. They snatched it away from Fenerbahce, now in this next zone, but they will have to defend it from 2 sides now because here comes Furious pulling up. Oh, dude, Furious Gaming as well. It seems like they want a little bit of piece of compound. So they as well are just going to be charging in. Next Ria trying their best to defend this from 2 teams. S2G and Furious Gaming now. Next Ria
They are one of those teams that are pretty good as well, so we cannot underestimate them for sure. But H2G realizing the same fact, and now they're also trying to push in a little bit more. This means next 3 are getting sandwiched, Dave. S2G, they play this one so slow, so methodical. They recognize the push from the opposite end from Furious, and that was the time that they decided to make the collapse. And now it looks as if they might come on top because Yakita really low in the health department, below 50% HP, looking to pop one of these heals. But look at this, S2G, they're actually going to use this time to get a revive. So they're going to have 3 up here late game. That's huge. Oh, he also locked in a nade inside the shack. That means Yakita will have to move out, and he does. Confirming the elimination as well. Next 3 are now eliminated out the game. Only top 3 teams left, Dave. Oh my god, I can already feel my adrenaline rush over here. Look who's still alive from Enigma Galaxy, by the way. Look who's still alive, getting those placement points. Third place, 10 points confirmed. So that is huge considering they have no elim points. But Stalwart, 11 circle shift. Listen, 11 elim points, okay? And now the circle shift, so they have that north to kind of play with and move around. Meanwhile, S2G, they're going to be locked behind these walls, so it's going to be a challenge for them to push out. And not only that, look at Stalwart. They're 2-2 split. They got 2 on the high ground, 2 in this dip up close and personal. Looks like they'll be pulling back action here. They recognize their advantage, but 3 teams to go, Necro. Yeah, I do like what Stalwart Esports is trying to do with your action. Of course, the man who likes to play on the front foot, and the rest 3 players are going to be on the back on the high ground. That means they're going to be having so much visual info to work with, as Stalwart Esports are just simply going to dominate it the way they're playing. If they don't make any rookie mistakes, without a doubt, Stalwart Esports will dominate this final zone. But H2G as well, they have 3 players alive. And I like how you put an action in the front line, kind of that Terminator, that one that seals the deal, has their teammates above them playing oversight, making sure that they stay alive. And now it looks like they're going to be setting top down here, so they're going to be working in tandem. Timber was connected on, Silas behind the tree. Oh, it all comes down to this for game number 1. Oh, it all does come down to this. Every single player sweating inside the lobby. And so does Stalwart Esports and H2G, but H2G a little bit more pressure added on their side as 2 players already taken out the game, and now Hamoudi as well. Seems like he's finally woken up from that nap. And well, guess what? Who takes it? Who backs the first game? It's going to be Stalwart Esports. Let's go! Game number 1, Stalwart coming on top, not only with that winner chicken dinner, but a ton of elim points. Hamoudi though, hey, shout out to Hamoudi. Second place, I'll take that all day long as a solo snake, trying to avoid those sidelines, trying to play nice and sneaky. That is 12 placement points in 1 game. That's solid. Huge. That's huge, dude. That's huge. If they're able to just play like that, play consistent, even able to get those consistent placement points, I mean, for a start of game, that's absolutely not bad. And if we talk about late rotations again, I mean, Godlike making the same kind of mistake, in these kind of southern zones, you always got to be those teams that are pretty quick to rotate. If you're not able to do so, you're just going to be held back, and that's what exactly happened. Alpha 7 was just hammering the pain into them. Yo, what? Shout out to everybody watching right now, by the way. PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. You tuned into the right stream. We got 17 more games to go. Stalwart coming on top right there. I have to assume they are going to be getting a massive point lead. Not only the point lead in number 1 game, but also a confidence booster. We don't talk about this a lot, but that stress, right? Just imagine the stress levels on all these teams. For them to be able to come into this lobby, the most stacked lobby of the year, and come out on top, that is phenomenal. Ladies and gentlemen, that was game number 1. Let's hear what the desk got to say about this first game. Over to you. Well, you know what we have to say? I think Maxman was wishing we were doing predictions, not teams to watch, because he gets a prediction right. But let's be honest, boys. The guys from Mongolia coming in, taking a chicken dinner with that many eliminations, they've proven they've shown up to play. Yeah, I mean, this is the reason why you have to look out for this team. They survive until the very last minute as a 4-man squad. They got themselves 14 eliminations on the very first game. They came to play here, Seven. They came here to play big time. The way they were able to eliminate 4 rivals. I mean, 4 rivals that they were trying to pass that bridge, and Stalwart Esports were just able to hold that ground, hold that bridge camp. And then as soon as they were able to do that,
the next circle popped up and they moved right away. So their communication is on point, and this is something that you were telling me, right? Yeah. They don't miss in regards to anything. I was actually really surprised too that how they were able to beat Nova. I thought maybe King from Nova was going to be able to surprise them a little bit. That backfired. King said, you know what? Let me just double think that. No, I'm going to go back, and he didn't even try to challenge it. Ultimately, he ended up hurting Nova. See, I think for me, the most impressive fact about Stalwart is the fact that this is a team coming from Mongolia, right? We had Zeus Esports last year come in 3rd place, but you have this team who has really no international experience go into the global championship in the league stage and surprises, but then to go into the finals and do something like this in match 1, they're saying to every team out there, like, you want that $1.5 million? You got to come for us. You got to come through us if you want to get it. And we can see here 29 points in match 1. That is a phenomenal start. Yeah, we were talking a lot about this also, right? You had some teams that did maybe poorly into the league stage, did really good into the finals. Yeah. This is part of the few teams that got themselves to 3rd place in the league and also in the league finals for the Eastern region. And that consistency is definitely paying off. I had the chat with Senator, the coach of the team, and he said, we're going for that 1st place. And Dodoy, of course, they're going to go for that 1st place with that 1st performance here. And 7, I think one thing to keep in mind of is the amount of teams we did see S2G and Na'Vi come in from West, able to perform when they need to here. There's a lot of questions around West if they compete with East, and we already see 2 teams able to do so. Yeah, I mean, with S2G, I was even mentioning, that's one team that definitely has championship caliber for me, the way they're able to play, the way they're able to be patient, and the way they were able to kind of control that circle there too. Same with Nextria. I felt like Nextria positioned themselves really well. Ultimately, it just ended up backfiring for them. But the fight against the Fenerbahce, that was a great fight. I think Nox was able to rotate late, right, Max? I know you want to talk about this one. I want to jump on that one. When you're looking at Fenerbahce, they had such a good position. I think it was around phase 4, phase 5. They had a huge 4-man split, and they had a position advantage to get into that compound instantly. They took too long, and they left Nox in the scouting position that you do not need a scout anymore when you have a strong position like that, and they just got breached upon by the side of Nextria. It was so easy to execute. Fenerbahce, a little bit of a change towards the end there. That could have been their win on that 1st game. Yeah, also important to see that Order was the MVP, and we talk about, teams now in PUBG Mobile 2021 going into 2022. It is so important to have a team of all-stars, and we always talk about Paraboy, but we've seen Order step up, we've seen King step up, we've seen even QC be thrown into the team in the midst of league stage into the finals, able to step up, and it's a great sign for Nova, who are the defending champions. Definitely. I mean, another one that I know we saw Nova there, but S2G. We always talk about with them. Go back to West teams. Let's talk about S2G. I want to stick to my West teams, right? I know you guys are going to be pulling for those East teams. I'm going to be sticking to the West teams. And you know what? Let's even skip that. Let's go to Godlike. I feel like we had to talk about that. Alpha 7, they were trying to bridge camp Godlike, and it absolutely backfired thanks to Jonathan. We're mentioning he is just such a great player, and he's able to clutch up when he's needed to clutch up, and he was able to do that perfectly there. Sadly, it didn't end up working out ultimately because they ended up losing before Alpha 7 went out. But overall, it's at least some elims and some points that are going to count towards them. The important part, though, for me in that is that Godlike are showing they're not afraid of any team, right? They're going to go up against Alpha 7. They're going to fight against pretty much one of the best teams from the West and be able to do a decent job. And Jonathan's showing he still has an all-star power. Yeah, they were just ready to go for the full push onto Alpha 7. That was very impressive. Jonathan able to get a somewhat clutch towards the end. He was able to get Neo back on his 2 feet, which is a really good play. But I think that, of course, this is a team that, because they don't have that international experience for a long time, the more games they're going to have, the more experience they're going to get, and they're going to change and adapt extremely quickly. So this 1st game, they're going to adapt, they're going to tweak things, and they're going to come back into the next Erangel even stronger. Okay. Well, what about maybe some teams that maybe let you down, not in a super negative sense, but like, for instance, Damwon, they were our finals champion of East. They didn't perform too well there at the very end, but they still had a decent showing. But it's not the team that we kind of would have expected after the results from finals. Damwon is an interesting one on this game because they were trying their best to go for the swim rotation. They were trying to avoid the bridges, which is understandable, right? Because you have so many teams that have as a speciality to hold the Western Bridge or the Eastern Bridge. Here they just tried to go for a full stack, swim over, and unfortunately doing so, you just lack information. They went right into Na'Vi, right into Nova, and it just went downhill from there on out. In regards to teams that actually didn't perform that well, I want to talk about Team Secret. They ended up losing to Damwon. I felt like their rotation, their push towards Damwon, it was just something that I didn't expect out of the team. It looked sloppy, the way they were able to rotate. Even one of the players, he decided to push in with a buggy. The buggy pretty much ended up going over the hill as well, and it put him in a position where he wasn't able to fight. You could see him trying to jump back in the buggy, maybe being able to shoot from the passenger seat, but nothing worked out there for Team Secret. Yeah, but it is just match 1, and Team Secret luckily do have 2 players who have played in every single final so far yet with Ice Shots and Mad Toy, dating back to 2019. But we'll talk about that a little bit more later on. We're going to actually do a little quick recap here. I'm not sure exactly what team it's going to be, but one thing
को मिले, जरूर यहाँ पे फाइट्स लिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप ब्रिज के ऊपर जाना कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। 4 राइवल्स अलायंस यहाँ पे छूट के ही गए थे क्योंकि पीछे की तरफ ऑलरेडी रह गए थे हमारे अल्फा 7 और गॉड लाइक के प्लेयर्स। एंड गलतियों की जरूर बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर का कंट्रोल लेना, हमेशा हमने एक चीज देखा है स्टारवर्ड के प्लेयर्स इस पर्टिकुलर गेम पे 2-2 स्प्लिट पे खेल रहे थे। हाई हिल्स का कंटेंशन इन्होंने ले लिया, जैसे कि हमने हमारे कास्टर्स ने ऑलरेडी बोल रखा था कि ये जो नॉर्दर्न हिल्स हैं जो सर्दर्न आइलैंड के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे क्रूशियल फाइट था उनका नोवा के साथ देखने को मिला था एंड काफी लंबे टाइम तक चली थी। पहले एंगेजमेंट हुए, डिसएंगेजमेंट हुए, द मोमेंट दे टुक द कंट्रोल, और जिस तरीके से ये जोन शिफ्ट हुआ उनके तरफ, कहीं ना कहीं तय सा हो चुका था कि ये चिकन डिनर तो उन्हीं का है। बट यू नो, इससे पहले हमने पीएमजीसी ईस्ट में ऐसे एक सिमिलर सर्कल देखा था जो कि कॉम्पाउंड्स की तरफ इवेंचुअली शिफ्ट किया था। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम्स लाइक केओस नेक्स्ट रुया जो कि बहुत ही ज्यादा सेंटर खेल रही थी, दे एक्सपेक्टेड कि सर्कल उसी तरफ जाएगा, बट सर्कल के इरादे ही कुछ अलग थे। और पहले ही गेम में जिस तरीके से फुलझड़ियां यहाँ पे उड़ रही है, स्टारवर्ड ने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली। अब चलिए यहाँ पे इनकी फाइट्स की भी बात करेंगे, बट उससे पहले निग्मा गैलेक्सी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। राइट ऑफ द बैट हमने देखा सॉर्ट ऑफ अ बीटीआर रोटेशन देखने को मिला कि डायरेक्टली मेन आइलैंड से पानी के अंदर छलांग लगा ली, और जो बीटीआर स्पॉट रहता है, आप जो बोलते हैं जिस शोर लाइन्स के बगल में जो छोटे छोटे कॉम्पाउंड्स रहते हैं वो लिया। बट अनलकी रहे, वहां पे उनके सारे प्लेयर्स ध्वस्त हो गए थे, सिर्फ अकेले बचे थे यहाँ पे हमोदी, जिन्होंने काफी अच्छी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाई। बट इस पॉइंट के तरफ आई डोंट थिंक कुछ बचा था मैच के अंदर। स्टारवर्ड के पास मैप कंट्रोल देखिए किस प्रकार है, अगर आप मिनी मैप की तरफ एक बार नजर डालें तो यहाँ पे S2G के पास कोई मौका नहीं था। बट रिगार्डलेस यहाँ पे उनके अर्ली रोटेशन के कारण इनको इतनी बेहतरीन पोजीशनिंग पॉइंट्स मिली, और इनफैक्ट वेस्टर्न साइड से 2 टीम्स काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया। रही बात आप सबके पसंदीदा क्वेश्चन की तरफ, गॉडलाइक के साथ क्या हुआ। गॉडलाइक को हमने देखा कि काफी लेट रोटेशन करी, एंड हमने हमेशा रेकमेंड करा है कि हाँ, इस टीम के साथ जिस तरीके का गन पावर है, जरूर कर सकते हैं कुछ ऐसा रोटेशन। बट एट द सेम टाइम जब आप लेट रोटेट करते हो, जब सर्कल मिलिट्री बेस की तरफ ऑलरेडी हेड आउट कर जाता है अल्फा 7 के साथ, वो फाइट कहीं ना कहीं अगर अवॉइड हो सकता था, जोन के साथ अगर जोन के अंदर एंटर करते, देन दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। हमने देखा कि एक नॉक निकाले अल्फा 7 के प्लेयर्स की तरफ, बट उसके बाद देयर वाज अ स्लाइट डिले। क्लच गॉड और जी गॉड जब उसके बाद देर से निकले, तभी ऑलरेडी अल्फा 7 के प्लेयर्स ने अपना पोजीशन ले लिया था। तो एक नॉक मार के पुश करने की जो रणनीति रहती है, कहीं ना कहीं डिड नॉट वर्क आउट। हमने देखा जॉनथन ने एक फ्लैंक एंगल लेने की कोशिश भी करी थी, बट समवेयर डाउन द लाइन ही वाज स्पॉटेड आल्सो। बट उसके बाद भी हमने देखा एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड के साथ 2 प्लेयर्स को चिट जरूर किया था। करियो बाद में बचे, नियो जरूर लास्ट बचे थे गॉडलाइक के। जोन के अंदर इन्होंने एंट्री ली काफी लेट, बट उसी दौरान यहाँ पे स्टारवर्ड के प्लेयर्स के शिकार हो गए और गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे फिनिश हो गई। सो एनालिटिकली यहाँ पे गॉडलाइक कुड हैव अवॉइडेड द फाइट विद अल्फा 7 अगर थोड़ा सा डिले करते, बट देन अगेन स्टारवर्ड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाई हिल्स कंट्रोल एंड दैट फाइट विद नोवा डिड मैनेज टू विन दिस गेम एंड द फर्स्ट विनर चिकन डिनर। ये तो था फिलहाल अभी के लिए रिकैप सेगमेंट का, इतना ही। फिलहाल चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम आपसे वापस मिलेंगे, विल बी बैक विद गेम नंबर 2। I saw the first light, the first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I am the 1+9. Homes are now where we work, learn, and, play? Oops. Homes are where we build spaces to call our own. Power on and beyond with Singapore's most trusted broadband.
नमस्कार देवी और सजनों, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पीएमजीसी 2021 के ग्रैंड फाइनल्स में। आज के पहले दिन का पहला मैच और एंगल खत्म हो चुका है, जिसमें स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स ने काफी बेहतरीन तरीके से अपने नाम किया, वो विनर चिकन डिनर। लेकिन अब बारी आ चुकी है दूसरे मैप की। मीरामार का मैप रहेगा। दिस इज सुपर जॉनी, जॉइंड बाय ओशन शर्मा। दूसरा मैप, और अभी के लिए मोमेंटम जो बनाया वो स्टारवर्ड ने बहुत अच्छा बनाया। देखिए पहला गेम इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने खेला है कि उनको आने वाले मैप्स में मैं बोलूंगा कि दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो मैच हमारा मिरामार का रहने वाला है, इसमें मैं बोलूंगा अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से खेलेंगे। लेकिन पिका उनकी बोल्ड एक्शन चलने वाली है, वो काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस मैप के अंदर। सो विल हैव टू सी वो किस तरीके से यहाँ पर काम में लेकर के आते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्लैशेस जो प्रोबेबली यहाँ पर पोटेंशियल दिया है हाईएस्ट डैमेज 783 का। इनके पीछे आते हैं स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स के दो दिग्गज, जिनकी हमेशा बात करते हैं जब भी स्टारवर्ड ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एक्शन और टॉप। एक्शन दूसरे पायदान पर और टॉप तीसरे पर। बिल्कुल, एक्शन यहाँ नजर आता है, टॉप यहाँ पर नजर आता है, ऑर्डर तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिले थे। एमवीपी स्टैट्स में थे तो डैमेज स्टैट भी इनका अच्छा खासा है ही। वहीं पर एक्शन और टॉप की बात करें तो उन्होंने मिलकर के 1300 से ऊपर का डैमेज कर रखा है। और टॉप 3 प्लेयर्स की अगर हम लोग ऐसा बात करें इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशंस, 5-4-4 स्क्राई जो बैकबोन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत मजबूत है यहाँ पर इस टीम की, वो देखने को मिल रहा है। स्क्राई हमें नजर आ रहे हैं। देन देयर इज एक्शन एंड टॉप एज वेल। टॉप तो हमें पता है काफी ज्यादा बेहतरीन प्लेयर हैं ही हैं, पिका भी इन सबके साथ ही रहते हैं, काफी अच्छा खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक्शन हर बार कोई भी ऐसा टूर्नामेंट रहता है, कहीं पर भी होते हैं तो ये एमवीपी के प्रबल दावेदार नजर आते हैं। बट बोलना चाहूंगा एक्शन को देखते हुए कई बार दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशंस होती है अकेले भी जाते हैं, आगे जाते हैं बहुत। हमने कई बार देखा है कि ऐसी पोजीशंस होती है 1v2 1v3 सामने नजर आ रहा है, कोई नॉर्मल प्लेयर चार्जर नहीं करेगा, एक्शन का उल्टा रहता है, टीम को कॉल देते हैं कि मैं जा रहा हूं और चले भी जाते हैं, और फिर बाद में पी का लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, और वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। इज ऑलवेज द अनसंग हीरो अपनी टीम के, कि स्टैट्स में उतना नजर नहीं आता बट गेम के अंदर प्रेजेंस अच्छे से फील होता है। डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे से इनका प्रेजेंस फील होता है, और मिरामार में तो होगा ही होगा, काफी ज्यादा होगा। मिरामार की हम लोग बात करें, बट एक चीज जो अभी हम लोग जब ब्रेक पर गए थे तो ऑब्वियसली वो पिछले गेम की हाइलाइट्स चल रही होती है, उसमें एक चीज मैंने देखी कि प्लेयर्स के स्प्रेस कितने अच्छे रेगुलेशन पर, मतलब लाइक कितने रेगुलेटेड स्प्रेस यहाँ पर प्लेयर्स के होते हैं, काफी अच्छा कंट्रोल रहता है अपने वेपन्स का, जो मर्जी वेपन यूज करें काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। और ये अच्छे कंट्रोल को ही हम लोग देखेंगे मिरामार में, क्योंकि और ज्यादा लंबा यहाँ पर दायरा हो जाता है, फासला हो जाता है, उसके अराउंड प्लेयर्स को खेलना है, उसके अराउंड यहाँ पर स्प्रेस फाइट्स जो कुछ भी आप बोलिए प्लेयर्स को निकालनी है। सो वी विल हैव टू सी। एंगल पे मिलिट्री बेस करता है, वो यहाँ पे लॉस लियोनेस की सिटी पूरी कर देता है। अगर सर्कल इस शहर के ऊपर बना तो गेम में सबके लिए दिक्कत हो जाती है। जो टीम लॉस लियोनेस में होती है उनके लिए भी इरिटेटिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि जब टीम्स हर डायरेक्शन से आपके ऊपर पोर इन कर रही हैं, वो अपने कॉम्पाउंड को डिफेंड करना काफी चैलेंजिंग होता है। प्लस मीरामार के जो स्ट्रक्चर्स जिस तरह से डिजाइंड है, वो एलिवेटेड बिल्डिंग्स, आप चाहे एक डायरेक्शन में फाइट ले रहे हो, आप एक्सपोज्ड है, दूसरे एंगल से आपको गोलियां पड़ रही हैं। देखिए काफी होगा जरूर यहाँ पर इन सब फाइट्स की हम लोग बात करें, क्योंकि
मिरामार वाइब देता है एक ऐसे मैप की जो ऑब्वियसली हमें पता है बर्फीला मैप होता है, वो ऐसे मैप की वाइब देता है जहां पर विंडो पिकिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं अगर आप घरों के अंदर हो, बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से लेनी है। कोई और ओपन से आ रहा होगा और उसको आप पिक कर सकते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होगी। एग्जैक्टली, आई मीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिविजुअल सेंसेस और आपके खुद के परफॉर्मेंस पे बात आ जाती है। लेकिन चलिए परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे डिवाइस पार्टनर की भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। द ऑफिशियल डिवाइस पार्टनर जो कि OnePlus 9 सीरीज़ के डिवाइसेस हैं, 90 हर्ट्ज पे आप गेम का आनंद उठा सकते हो और आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस इस डिवाइस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओशन ने अभी स्प्रेस की बात करी थी, यू गाइस कैन डू दैट टू। आई मीन डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से प्लेयर्स काफी ज्यादा बेहतरीन खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं। लेकिन देवी और सजनों, अगले 10 सेकंड के अंदर हम लोग जाने वाले हैं हमारे दूसरे मैप के ऊपर, जो रहेगा आज के दिन का दूसरा गेम, ओवरऑल इस टूर्नामेंट का दूसरा गेम, मिरामार का मैच। और काफी ज्यादा क्रूशल ये जो मैच है रहने वाला है। हम लोग चलने वाले हैं, हमारा प्लेन चल चुका है और प्लेयर्स भी पूरे तरीके से तैयार होंगे। जो फ्लाइट पाथ है वो हमारी स्क्रीन पर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, नंबर प्लेट पर डांटे लिखा हुआ हमें नजर आ रहा था, उस जो कूप होती है, उस जो मिराडो होती है, सॉरी मिराडो के ऊपर। बट खैर हम लोग जाने को तैयार है। मिनाजल सुर से लेकर के लाखों बरेरिया के एरियाज तक ये फ्लाइट पाथ जाता है। नाउ दिस फ्लाइट पाथ kind of raises a lot of questions. एल्पोजो पर जो अल्फा 7 निग्मा गैलेक्सी की फाइट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो होगी या फिर क्या अभी भी अल्फा 7 कुछ अलग जाए? क्योंकि लास्ट टाइम भी वो जा तो सकते थे जॉर्ज पोल तक, गाड़ी ले लेते, कहीं से चले जाते, बट खैर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर डिसाइड किया। वहीं पर हम फ्यूरियस के प्लेयर्स की बात करें, वेल्डलमार के एरियाज ये लोग लेते हुए नजर आएंगे। हमें चुमासेरा के अराउंड इन्फिनिटी दिखाई देती है, प्लेयर्स उतरना शुरू कर चुके हैं। और वहीं पर फेनेरबाचे हमें लॉस लियोनेस जो सबसे बड़ा शहर होता है वहां जाते हुए नजर आने वाले हैं। एग्जैक्टली, और जैसा आपने अल्फा 7 का एक मुद्दा उठाया ओशन, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर ड्रॉप लोकेशन चेंज हो रहा है तो कहाँ पे जाके अल्फा 7 की टीम लैंड करेगी और वहाँ से गेम को स्टार्ट करेगी? आई फील वो लोग एल्पोजो ही जाने वाले हैं। आई फील ये मैप वो अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। यस, ये मैप वो अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछला मैप अगर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हो गया जो था हो चुका है। बट अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द हाउस, हासिएंदा डेल पैट्रोन, सैन मार्टिन, ये एरियाज। क्योंकि स्टारवॉर्ड सैन मार्टिन नहीं छोड़ेगी, वो जिद्दी है सैन मार्टिन के लिए, उनका घर है सैन मार्टिन, वो लोग सैन मार्टिन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अगर सदर्न सर्कल गया तो सोचिए कितनी दिक्कतें नॉर्दर्न साइड की टीम्स को हो सकती हैं। लॉस लियोनेस के अराउंड का सदर्न, बहुत खुश हूं आज मैं। ये जोन कोई मैं बता रहा हूँ नीचे ही खींच रहा है, बार बार जो गोले हैं वो नीचे ही खींचे जा रहा है। पहला सर्कल हमने देखा नीचे की तरफ को गया था, ये वाला सर्कल हम देख रहे हैं नीचे की तरफ को जा रहा है। कोई ना कोई तो सर्कल नीचे ही खींच रहा है। बट खैर जोक्स अपार्ट, अल्फा 7 निग्मा गैलेक्सी दे आर देयर। काश हमें इस बार एक बार सर्कल दिखाया जाता, काश हम लोग उसकी बात कर सकते जो यहाँ पर चेंजेस टीम्स ने अपने ड्रॉप्स के अराउंड किए हैं। आई गेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो। हमारे लिए खुशी की चीज है, हमको एक एक्साइटिंग गेम देखने को मिलेगा ओशन, क्योंकि अब मेजॉरिटी टीम्स के लिए एक बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन बन चुकी है। और right जैसे ओशन बोल रहे हैं कि सर्कल अगर दिखता तो और मजा आता, क्योंकि वो जो सैन मार्टिन वाली सिचुएशन है, एक बहुत बड़ा क्लस्टर वहां पे बना हुआ है। स्टारलॉर्ड ई स्पोर्ट्स है, S2G की टीम वहां पे मौजूद है, डाजेवियर के प्लेयर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे एक टीम थी जो हम एक्सपेक्ट करते, गॉडलाइक, जो थोड़ा इस पोजीशन पे उतरना पसंद करती है, उन्होंने डिसाइड किया थोड़ा सा नॉर्थ जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल, वो लोग गए हैं वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड। उनका एक स्प्लिट है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग पिछले मैच की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स, जब तक इस मैच में फाइट नहीं होती, चलिए पुराने मैच की बात करते हैं। आप देखिए क्या उतरे क्या नहीं उतरे, बट जब उतरे तो बहुत ज्यादा ही अलग उतरे। वो है हमारे 6 to 8 के प्लेयर्स। फ्लैशबैक्स होते हैं ना, मतलब कुछ बुरा होता है तो फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक देखिए अच्छी चीजों के लिए जाए तो अच्छा रहता है। अच्छे फ्लैशबैक्स कम आते हैं। Those are called happy memories. ये भी बात आपकी सही है। बट खैर यहाँ पर स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स को हम लोग देख पा रहे हैं। आप देखिए स्ट्राइड जिनकी हमने बात करी, काफी अच्छे एलिमिनेशंस इनके पिछले गेम में आए थे। इनफैक्ट एलिमिनेशन के नाम में जी सबसे ऊपर ये हमें देखने को मिले थे। बट दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। पावर ग्रिड के अराउंड उतरती थी 6 to 8 की टीम, जी हाँ, बट 6 to 8 इस समय लॉस लियोनेस पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि पावर ग्रिड मोंटेनुएवो को 4 राइवल्स ने पकड़ रखा है इस गेम के अंदर। तो 6 to 8 ने सही यहां पर डिसीजन लिया कि सीधा लॉस लियोनेस का एरिया उन लोगों ने होल्ड कर दिया। इनफैक्ट लॉस लियोनेस तक चले गए वो लोग, काफी जल्दी उन लोगों को वहीं पर भी लूट मिलना शुरू हो चुकी है। लॉस लियोनेस इतना बड़ा शहर है कि वो 2 टीम्स को तो आराम से ले सकता है। वहीं पर फेनेरबाचे भी आती है और वहीं पर 6 to 8 भी आती है। दोनों टीमें लॉस लियोनेस में हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट
के प्लेयर्स भी हम लोग देख पा रहे हैं मॉन्टेनोवा के अराउंड आराम से लूटते हैं। नोवा के प्लेयर्स की बात करें, ये लोग अभी जोन के एज पर हैं, जो मिनास जनरलिज ग्रेवयार्ड के अराउंड ये लोग उतरते हैं, इनका स्प्लिट रहता है उस एज पर। ये लोग हमें अभी के लिए नजर आ रहे हैं। टीम सीक्रेट क्रूज़ेवेल पर नजर आती है, थोड़ा लेट जाना उनको पसंद है। डजेवियर एल अजहर पर हमें नजर आती है, ये देखिए यहाँ पर है, अभी भी पूरा एल अजहर लूटेंगे आराम से, उसके बाद जाने वाले हैं। ऐसे में इम्पाला पुएर्तो परासियो पूरा खाली है। कोई टीम अगर अराउंड द जोन आना चाहे, they have a very good area for them. Exactly, लेकिन चलिए इन दिग्गजों की भी बात कर लेते हैं, द प्लेयर्स ऑफ डामवॉन गेमिंग, जिन्होंने काफी अर्ली रोटेशन दिखाया और ये ऑलरेडी लॉस लियोनेस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट सिटी को एंटर भी करने वाले हैं। पिछले मैच में इनकी काफी इंटरेस्टिंग फाइट हुई थी लास्ट गेम का, जैसे फ्लैशबैक्स की बात करें। हाँ, टीम सीक्रेट के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी फाइट ली थी डामवॉन की, ये बात तो कहनी पड़ेगी। टीम फाइट्स के अंदर काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है इनका। प्लेयर्स अगर कभी पीक करते हैं, किसी एंगल से निकल रहे होते हैं, हमेशा साथ में जाते हैं और बहुत बहुत कोऑर्डिनेटेड रहते हैं उनकी ऑटिक फाइट्स के बीच में भी। 4 राइवल्स जो पावर ग्रिड के अराउंड हमें नजर आ रही है, वो अब अपनी जोन में ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो करना शुरू कर चुके हैं। जोन के एज पे रुकना चाहेंगे या किसी अच्छे रिज पे रुकना चाहेंगे, ये उनके ऊपर है। बट इन सब के बीच में जो टीम वैल्डल मार गई थी फ्यूरियस गेमिंग, वो तो अराउंड टू द सदर्न साइड ऑफ द सर्कल ऑलरेडी हमें आते हुए नजर आए। टीम सीक्रेट अगेन लेट रोटेशन करते हैं ये लोग, वो लेट रोटेशन ही करने वाले हैं। ये लोग क्रूज़ेवेल पर अभी भी हमें नजर आ रहे हैं, सर्कल आ रहा है, इनको अभी फर्क नहीं पड़ता, आराम से गाड़ियां वगैरह ढूंढेंगे। एक गाड़ी आएगा इनको मिल चुकी होगी, वाटर ट्रीटमेंट तक एक प्लेयर कभी कभी आ जाता है गाड़ी लेने के लिए, बट उन्होंने देखा होगा कि वाटर ट्रीटमेंट पर एक टीम उतर गई जो कि गॉड लाइक है, तो वो लोग अभी वहां पर नहीं है। हालांकि इन सब चीजों के बीच में अगर हम लोग बात करें हासिएंदा देल पैट्रोन की, वो खाली हो चुका है क्योंकि S2G ऑलरेडी वो लोग मूव करके हैं। लॉस लियोनेस में हमने आपने भी स्टार्टिंग में मेंशन किया 6-8 ने अभी थोड़ा दबदबा बना के रखा हुआ है। अब काफ़ी सारी टीम्स उस सिटी को कंटेस्ट करने वाली फाइट ज़्यादा देर तक आपको अवॉइड करने का एक ऑप्शन रहता है, लेकिन 6-8 के प्लेयर्स सिटी पे फैल चुके हैं और अब काफ़ी सारी टीम्स एकदम से उनके बहुत करीब पहुंचने वाली है। क्या लगता है क्या होगा वहाँ? 6-8, मैं सिर्फ 6-8 के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं हूं डामवॉन के लिए भी चिंतित। वो टीम भी बहुत ज्यादा ऐसे सर्कल के अराउंड सेंट्रल एरिया होल्ड कर चुके हैं और उनका सेंटर है चुमासेरा और लॉस लियोनेस दोनों के बीच में ओपन स्पेस। तो खुद सोचिए टीम्स उनके अराउंड से, कोई लॉस लियोनेस जाती हुई टीम भी एकदम से अगर चेंज कर ले अपनी रोटेशन, तो सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट उस टीम के लिए हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी मीनवाइल हमें नजर आ रही है जाती हुई एल्पोजो की साइड से स्टार्ट करते हैं, बट निग्मा गैलेक्सी अकेली नहीं। आप देखिए अल्फा 7 के साथ साथ ये लोग मूव कर रहे हैं और वहीं पर ऊपर नावी के प्लेयर्स ये लोग तो जाते हैं ला कॉपरेरिया पर, ला कॉपरेरिया से सीधा अब सर्कल के अंदर आना ये लोग शुरुआत अपनी कर रहे हैं। वहीं पर स्टारलॉर्ड, इस चीज के लिए हमेशा हर कोई चिंतित रहेगा जो भी इनके अपर साइड वाली टीम्स है स्टारलॉर्ड की, कि ये लोग वो हिल पकड़ करके रुक जाते हैं। खैर अब ये भी जाना शुरू कर चुके, गाड़ी के अंदर प्रॉब्ली बैठ चुके हैं ये प्लेयर्स, सो दे आर मूविंग फॉरवर्ड एज वेल। बट इन सब के बीच में अगला सर्कल बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है टीम्स के लिए। एग्जैक्टली अगले सर्कल की शिफ्ट अगर एक बार फिर से बिल्कुल लॉस लियोनेस पे गई तो टीम्स के लिए शहर को कंटेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट हर एक बीतते मिनट के साथ ऑलरेडी और ज़्यादा प्लेयर्स शहर के अंदर कॉम्पाउंड्स अपने लिए सिक्योर करने की कोशिश ऑलरेडी करना चालू कर चुके हैं। गॉड लाइक आते हुए हमारी स्क्रीन्स पर अब फाइनली वाटर ट्रीटमेंट से आगे सर्कल की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू किया है और ये अकेले नहीं है, इन्हीं के साथ साथ नावी और टीम सीक्रेट की टीम्स ने भी अपने अपने कदम बढ़ाए हैं आगे। एज पे हो सकता है कि पिकाडो की तरफ स्टारलॉर्ड ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट कुछ कोलिजन देखने को मिले, बट वो पाथवे जब हमारे पास एक क्लियर आ जाएगा, मैप जब हम देखेंगे तब ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली टीम्स क्या रूट, क्या जो रास्ता है वो चूज कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप 4 राइवल्स को देखिए, ये लोग तो चुमासेरा पर पहुंच चुके जहाँ पर इन्फिनिटी पहले होती थी। एयर ड्रॉप है यहाँ पर, लोगन रुके हैं, उनको एयर ड्रॉप चाहिए ही चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज भी है। देखिए अगर आपको एयर ड्रॉप मिल जाए तो क्या ही खराब है उसमें। लेवल 3 हेलमेट वेस्ट तो डेफिनेटली उनके पास आ चुका है, बट क्या वेपन उठाने वाले हैं ये या नहीं? ऑलराइट, वेपन तो अभी तक नहीं पिक किया है। निग्मा गैलेक्सी फ्रॉम अराउंड द सर्कल
ये लोग अब मूव कर रहे हैं, इनको पता चल चुका था कि अल्फा 7 जो इनके लिए पोटेंशियल थ्रेट एल्पोजो में बन सकता है वो अभी भी इन्हीं के आगे है। आप देखिए ये जस्ट एरिया स्काउट आउट कर रहे हैं। रफ आप देख सकते हैं व्हीकल के अंदर थे तो ऊपर जा रहे हैं, बट ये सर्कल अगर एक शिफ्ट मार गया ऑलरेडी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। लॉस्ट लियोनिस के पीछे और पुएर्तो पराइजो के पीछे अगर ये सर्कल गया, देखिए डायरेक्शनल शिफ्ट अच्छा है लॉस्ट लियोनिस पुएर्तो पराइजो की तरफ। डजेवियर के प्लेयर्स दे हैव अ क्लियर एंट्री इनसाइड द जोन, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऐसे में अब गॉडलाइक को मैं तो बोलूंगा कि उनको सीधा एंटर करना ही चाहिए सर्कल। उनके सामने बहुत ज्यादा ओपन एरियाज हैं, वहां से एंटर करिए और सर्कल के अंदर एक बहुत अच्छा सेफ स्पॉट पकड़ लीजिए। डेफिनेटली दैट कैन वर्क आउट, बट लुक एट देम राइट नाउ जस्ट स्टिल फाइटिंग द ब्लू। अभी तो ब्लू जोन से बाहर एक सेफ एरिया में पहुंचेंगे और उसके बाद एक्चुअल सर्कल तक भी सफ़र तय करना है गॉडलाइक को। और देखना चाहूँगा कि इनके आसपास की जो टीम्स हैं उनके अगेंस्ट क्या कोलिजन होता है कि नहीं, और इनफैक्ट सर्कल पे पहुंचने के बाद किस तरह का अप्रोच गॉडलाइक की तरफ से रहने वाला है। बट जैसा आपने डाजेवियर की बात करी, आई थिंक काफ़ी अच्छा एडवांटेज उनके पास है अगर वो पोर्तो पोरासियो तक पहुँच के वहाँ पर कंट्रोल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स इस समय सर्कल के वेस्टर्न जो हाफ है, सर्कल का वेस्टर्न हाफ है, वहीं पर कंटेस्ट करती हुई नजर आ रही है और वहीं पर सबसे ज़्यादा फाइट्स होंगी। फाइट्स का नाम लेते ही डाम1 और 628 एक दूसरे के आमने सामने। फेनेरबाचे के प्लेयर्स थोड़ा सा दूर मौजूद, बट 628 वो भी अपने सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और डाम1 अपनी रोटेशंस को। थोड़ी बहुत गोलियां यहाँ पे लगी हैं जूनी को, एचपी काफी कम, लेकिन बचते हुए आगे निकल जाएंगे और अपनी टीम के साथ आगे जाके हील करने की कोशिश की, बट फेनेरबाचे को ओपनिंग मिलती हुई और आता हुआ इस गेम का फर्स्ट ब्लड। डाम1 के जूनी को यहाँ पे डाउन किया है फेनेरबाचे ने। बिल्कुल फर्स्ट पिक यहाँ पर आता हुआ हमें नजर आया, लेकिन जो फर्स्ट पिक आया काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्लेयर्स की मोमेंटम में आया। और आप देखिए 628 ने फाइट इसलिए नहीं ली, उनको पिछले गेम में कोई पॉइंट्स नहीं मिले थे, इस बार जान के भी वो एग्रेशन ऐसा नहीं दिखाना चाहते जो उन पे बैकफायर कर जाए। सो 628 ने प्लेयर्स को देखा और रास्ता क्लियर कर दिया उनको आगे जाने के लिए। डाम1 के प्लेयर्स जब 628 के सामने से आ रहे थे, बट खैर एक स्मोक किया फावियान ने, उनको लगा कि शायद उनको पीछे से कहीं से गोलियां पड़ सकती हैं, तो रुके, खुद को हील किया एंड नाउ ये चोजन के आगे जाएं। फॉरेस्ट उनको कवर दे रहे थे आपने देखा, लेकिन जब फॉरेस्ट को पता चल गया कि और कोई प्लेयर है नहीं वहां पर, तो वो जस्ट आराम से मूव करके, बट इन जोन्स के अराउंड एक बहुत बड़ा नॉर्दर्न क्लस्टर बन रहा है। आई विश हम देख सकते हैं स्टालवर्ट, गॉडलाइक, इनफैक्ट वही नहीं, टीम सीक्रेट और नावी, 4 टीमें एक दूसरे के साइड बाय साइड चल रही हैं जी। इम्पाला के वेस्ट में जो एरिया होता है साइड बाय साइड एक दूसरे वहां पे कंटेस्ट होगा ये, अगर लड़ाई होती है तो ये काफी ज्यादा chaotic होने वाला है। ये देखिए बट मैप पे नजर डालिए, ये chaotic हुआ है ये गॉडलाइक के प्लेयर्स एंड ज़ी-गॉड बिल्कुल ओपन में फंसे हुए हैं। उनकी व्हीकल को ब्लो अप कर दिया गया है, जाने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है ज़ी-गॉड के पास, बस एक ही चीज कर सकते हैं, सर्वाइव करे। बट नावी आती हुई थर्ड पार्टी हो चुका है इस फाइट में। एग्जैक्टली साइड बाय साइड फाइट हो रही है, लेकिन इसमें स्टालवर्ट को नुकसान है क्योंकि टॉप बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। टॉप बहुत ज्यादा आगे आ चुके थे और टॉप ने ये चीज समझ ली, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, अपने प्लेयर्स के पास ये जाना चाहते हैं, लेकिन अब किचनो का पूरा ध्यान ज़ी-गॉड की तरफ को आ चुका है। बट टीम सीक्रेट भी तो गॉडलाइक के जो बाकी प्लेयर्स रहेंगे उनको 2-3 प्लेयर्स जो वहां पर है उनको ये लोग चकमे में लेकर के आ सकते हैं, तो इन प्लेयर्स को देखना पड़ेगा कैसे ये लोग फाइट ले। बट नावी के प्लेयर्स अब आगे जा रहे हैं और आप देखिए वहीं पर स्टालवर्ट के ऊपर चढ़ सकते हैं, बट ज़ी-गॉड को पिक किया जाएगा। दूसरा पिक इस गेम का बनते हुए गॉडलाइक के प्लेयर्स, लेकिन एक और प्लेयर शायद आगे जाकर के पिक हो सकते हैं। गॉडलाइक के देखना पड़ेगा कि वो फाइट के अंदर आते हैं नहीं। इंडिया साहब देखिए नियो को भी पिक किया जाता है इस जगह के अंदर क्योंकि उनके पीछे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स थे एंड टीम सीक्रेट उनसे फाइट लेना चाहती है। बट क्लच गॉड और जॉनथन आगे की तरफ को मूव करेंगे, बट सर्कल इस समय क्या मंजूर है जोन को, वो एक बात आती है। पानी के एरियाज के अराउंड, यस अभी भी पानी के एरियाज के अराउंड है और अभी भी गॉडलाइक, टीम सीक्रेट, स्टालवर्ट, उनकी दिक्कतें ये हैं कि सर्कल में वो लोग नहीं है। ऐसे में आप फ्यूरियस गेमिंग को देखिए, जोन का कितना ज्यादा सदर्न एरिया उन्होंने होल्ड कर रखा है। इन्फिनिटी को देखिए कितना ज्यादा सदर्न एरिया उन लोगों ने होल्ड कर रखा है और फ्यूरियस काफी देर से वो पोजीशन अपने लिए मेंटेन करके चल रही है, वो शोर लाइंस के करीब काफी ज्यादा खेल रहे हैं। लेकिन चलिए स्टारवर्ड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे नावी पे शॉट्स लेती हुई नजर आ रही है। टॉप ने किचूने की एचपी काफी ज्यादा कम करी है। दूसरी तरफ डाम1 और S2G की लड़ाई, टिम्बर को नॉकआउट किया जाएगा। नियो का किल जो फिनिश है वो वहां पे सिक्योर किया टीम सीक्रेट के प्लेयर ने। और यहाँ पे टीम सीक्रेट के लिए एक चीज बोलूंगा, मौके का सही फायदा उन्होंने उठाया है। जब ये तीनों टीमों के बीच में हल्का सा क्लैश हुआ, टीम सीक्रेट ने हर चीज को इग्नोर किया। उन्होंने कहा सर्कल में पहले चलते, बात की बाद में देखेंगे। बट खैर स्टालवर्ट के प्लेयर्स अराउंड द जोन, अब ये लोग भी मूव कर रहे हैं। आई नो कितना कारगर इनके लिए अब रहेगा क्योंकि ये लोग बहुत पीछे हैं।
आई बिलीव ये गेम शायद स्टारलॉर्ड अपना ना बना सके अगर ऐसी जोन के बाहर रहते रहे बार बार, क्योंकि फाइट्स अच्छे निकाल रहे हैं, नो डाउट टीम्स को दिक्कतें दे रहे हैं, बट खुद को सर्कल के अंदर नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोग अभी के लिए। तो उसके लिए इनको चार्जिन मार्जिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। और S2G के प्लेयर्स, अगर इनकी बात करें, इनका एक प्लेयर अभी थोड़ी देर पहले पिक हुआ था डायमंड के प्लेयर्स के द्वारा। हमें एक प्लेयर पिक होते हुए नजर आए जरूर थे, एंड दैट वाज टिम्बर, जो हमें दिखे थे पिक होते हुए। बट अब टीम सीक्रेट अराउंड द जोन, ये लोग भी मूव करना चाहते हैं। सर्कल के अंदर आना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बंद करके बैठा हुआ है। अगेन 16 की 16 टीमें अभी भी जीवित हैं और टीम सीक्रेट शायद S2G को देख रही है, क्योंकि सर्कल के अंदर ये लोग हैं नहीं और सर्कल के अंदर S2G, वो लालच बन जाती है, वो वाले घर अब लालच है इनके लिए। एग्जैक्टली और रोशन, अब मैं बोलूंगा इस गेम में बहुत ज्यादा मजा आएगा एकदम से, क्योंकि ये जो लॉस लियोनेस के सदर्न साइड पे जो पहाड़ होते हैं वहां पे कॉन्टेस्टेशन काफी अमेजिंग तरीके से टीम्स के बीच में देखने को मिलेगा। एक्शन को देखिए, टिक्से को स्पॉट आउट तो किया, लेकिन वो बग्गी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज और टिक्से बचने में कामयाब। स्टारलॉर्ड ई स्पोर्ट्स अभी भी किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं ये प्लेयर्स की नावी को थोड़ा और परेशान करे। एक और पिक अगर निकलता है उस टीम की तरफ से तो वो इन्हीं के पास आए। नावी के प्लेयर्स धीरे धीरे वो जो 5 स्टोरी रहती है उसके पीछे से आप देखिए ये लोग मूव कर रहे हैं, बट अराउंड द जोन ही इनका मूवमेंट आप देखिए सर्कल के अराउंड किस तरीके से है। लेकिन इनके ऊपर शॉट्स आ सकते हैं, एंड यस डेफिनेटली इनके ऊपर स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स शॉट्स दे रहे हैं, जहां पर डैमेज बहुत ज्यादा एक प्लेयर को दिया गया था, खुद को सेफ पाएंगे। बट वहीं पर और भी प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं जो नोवा के हो सकते हैं थोड़ा सा पीछे, बट यहाँ पर टिक्स ही अगले प्लेयर हो सकते हैं जो शायद कैजुअलिटी बने। उनकी बगी बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ चुकी थी, बट वेल as of now he survives. No, he does not. Buggy does not survive and he also goes down. टॉप के द्वारा यहाँ पर नॉक निकाला जाएगा और पिक भी किया जाएगा एक और प्लेयर। हमें अब पिक होता हुआ नजर आता है। क्लच गॉड के हाथ में हुआ है अभी अभी इन्फिनिटी निग्मा गैलेक्सी और फ्यूरियस गेमिंग का अल्फा 7 को भी चलिए मैं बोलूंगा काफी ज्यादा फायदा हुआ है। उनको भी कोई कंटेस्ट नहीं करेगा रोटेट करने के लिए, बट ये जो टीम है अभी तक लड़ाई कर रही थी ये चुकी है इनको बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। क्योंकि स्टारलॉर्ड ई स्पोर्ट्स, नावी, नोवा की बात करें ये भी हिल्स पे थोड़ा सा लेट हुए थे। डाजेवियर के प्लेयर्स को क्लस्टर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। फेनरबाचे भी उसी लिस्ट में आती है। सर्कल के एज तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इन टीम्स के लिए। टीम सीक्रेट पहुंची जरूर, वहीं पर आप देखिए फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स थोड़ा सा अपर एज होल्ड करके बैठे हुए हैं। रिप 7 ने एक प्लेयर को पिक किया जो डजेवियर के थे, दैट मींस डजेवियर अब और दिक्कतों में धीरे धीरे पड़ती हुई नजर आएगी। टीम सीक्रेट सरप्राइजिंगली इस बार थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगा एग्रेसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, मतलब टीम सीक्रेट को पता चल चुका है कोई प्लेयर तो उनके करीब रहेगा और पापी एक प्लेयर को पिक करेंगे जरूर यूएमपी का इस्तेमाल करके, लेकिन उनकी खुद की लोकेशन यहाँ पर रिवील हो चुकी है। गलत डायरेक्शन में इस समय के लिए देख रहे हैं, बट एक नीड अगर उनके पीछे आता है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। पैराबॉय इनफैक्ट 6 के टॉप को पिक करेंगे। पिछले गेम का बदला मैं बोलूंगा हल्का फुल्का लेने की यहाँ पर कोशिश हो जरूर रही है। अराउंड सर्कल टीम्स रोटेट करती हुई नजर आएंगी, बट पापी क्या वो यहाँ पर और पिक्स निकाल पाएंगे, क्योंकि वो अपनी टीम से दूर है। पूरी टीम अपर एरिया पर है, बट उनके पीछे फेनरबाचे भी आ रही है और पिक जरूर निकाल लेंगे वो। बट टीम सीक्रेट दे आर रेडी फॉर 1-on-1। यहाँ पर जंपर बिल्कुल सामने, पापी ने शायद उनको स्पॉट नहीं किया तभी वो वेपन नहीं निकाला है उन्होंने, बट आई गेस इजीली उनको पिक किया जाएगा बिकॉज ही वाज बर्निंग डाउन। बट S2G आ चुके हैं इस पूरी फाइट के अंदर, वो तो खैर आराम से वो आगे ही जा रहे हैं। ऐसे में शायद फ्यूरियस के प्लेयर्स उनको पिक करें, बट वेल नो, उनका पूरा ध्यान टीम सीक्रेट के ही ऊपर। I mean, S2G के प्लेयर्स आए, उन्होंने इस टेरेन का मुआयना किया, देखा कि क्या चल रहा है और अपने रास्ते पे वापस चले गए। बट दूसरी तरफ ओशन 4 राइवल्स करीब आई मीन इस गेम से बाहर ही हो चुकी है इनफैक्ट टीम, और लगातार दूसरा गेम काफ़ी ख़राब जाता हुआ 4 राइवल्स के लिए। अल्फा 7 के अगेंस्ट उनकी फाइट हुई थी, हमने देखा था उस फिनिश फीड के ऊपर कि किस तरह से अल्फा 7 के प्लेयर्स ने वहाँ पे उनको बाहर किया था। बट स्टारलॉर्ड ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखिए, डामॉन के काफ़ी करीब से गुजर रहे हैं और डामॉन पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड है। डाजेवियर के 2 प्लेयर्स इनकी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, फ्रैंकी और लैम्बोर्गिनी।
फ्रैंकी हील अप तो किया है, बूस्टर्स भी लगाए हैं, एचपी वापस से 100 होने का इंतजार कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ इनके जो टीममेट थे डक, उनको डाउन किया जाएगा फेनरबाचे के द्वारा। डाजेवियर बहुत ज्यादा परेशानियों में घिर चुकी है। सेम गोज फॉर टीम गॉड लाइक, क्योंकि क्लच गॉड जो थे उनको भी नॉकआउट कर दिया गया है। उनको एक्शन ने नॉकआउट किया, जो ऑब्वियसली अपनी रोटेशन पर थे, तो उनको जो सर्कल का एज होता है उस पर यहाँ पर अपना दबदबा बनाना था। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश स्टालवर्ट ने भी करी, और साथ के साथ मैं बोलूंगा ये कोशिश नजर आई हमें गॉडलाइक की तरफ से भी, बट स्टालवर्ट के प्लेयर्स एक एक करके मेरे को लगता है शायद यहाँ पर डाउन होने, आप देख सकते हैं प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है, बट मेरे को साइलेंस को पिक किया जाएगा। दैट मींस वन मोर टीम एंड दैट इज S2G इज आउट। अब पिका को समझना है कि वो कैसे सर्वाइव करे, क्योंकि वो अकेले बचे हैं, बट प्लेज़ोन गॉडलाइक के क्लच गॉड को टेक डाउन करता हूं, मतलब जॉनथन अब अकेले प्लेयर बचे हुए हैं, वो रिवाइवल पर जाएंगे नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि उनकी फाइट इस समय किसी और से है नहीं, बट प्लेज़ोन से एक बहुत बड़ी फाइट लेते हुए नजर वो लोग आ रहे हैं। 14 टीमें अभी भी बची हैं, अगर यहाँ पर एलिमिनेशन होता मतलब कोई पॉइंट इनके पास नहीं आएगा। सर्कल तो और अलग कर्वबॉल जहां पर देना मुझे लगता है तैयार रहेगा जरूर सर्कल जिस तरीके से जाएगा, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा जोन दे रहा है अभी तक। निग्मा गैलेक्सी के घर में सर्कल है, इनको पहले गेम में भी टॉप 3 मिला था, इस गेम में तो पूरा सर्कल मिल रहा है निग्मा गैलेक्सी को। कितना मेहरबान मैं बोलूंगा यहाँ पर जोन बन चुका है, और गॉडलाइक का एलिमिनेशन होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आता है। 13 टीमें बची हैं, 13 टीमें अभी भी बची हैं, 38 प्लेयर्स इस गेम के अंदर मौजूद।